So let's continue with the second part of this lecture. Before continuing, we have to revise something regarding ratios. Okay. So the point is that when you are comparing ratios, A, we will compare two quantities of the same kind. मतलब मिल्क को मिल्क के साथ ही कंपेयर करेंगे, मिल्क को पोटैटोज के क्वांटिटी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. बी, while comparing ratios, units must be same. इसका हमने एग्जांपल देखा हुआ है पार्ट 1 में. और सी, रेशियो itself does not have any units. ठीक है. So let's go to the next question. Okay. What is the next question? Express the following as ratios in the simplest form. Question number 2. A, 7 rupees 50 paise and rupees 4. तो ये है आपका 7 rupees प्लस 50 पैसे. ओके. 7 rupees क्या है? 7 into 100 पैसे प्लस 50 पैसे, which is 700 plus 50 पैसे, which is 750 पैसे. और 4 rupees क्या है? 4 into 100 पैसे, which is 400 पैसे. अभी इनको कंपेयर, इनका रेशियो लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. 750 अपॉन 400. 0 गया, 0 गया. This is 5 into 15. This is 5 into 8. 5 ones are 5 ones are. This is 15 by 8. तो इसका रेशियो क्या होगा? 15:8. (700 ml to 1 liter). 700 ml एंड 1 लीटर. तो हमने क्या देखा है? बड़े क्वांटिटी को हम छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं. बड़े क्वांटिटी को हम छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बड़ा यूनिट छोटा यूनिट कन्वर्ट करेंगे. 1 लीटर है आपका 1000 मिलीलीटर. तो मुझे कंपेयर करना है 700 मिलीलीटर टू 1000 मिलीलीटर. तो 2 0 कैंसल. 7/10, लेकिन उसको लिखेंगे रेशियो में 7:10. ठीक है. उसके बाद सी, 6 meters एंड 1 meter 20 centimeters. तो 6 मीटर है 6 into 100 centimeters and 1 meter 20 centimeter is 1 meter plus 20 centimeter. 1 meter is 100 centimeter plus
20 centimeter, which is 120 centimeters. तो इनको रेशो बनाना है, तो दिस इज 6 into 100 अपॉन 120. ये ज़ीरो गया, ज़ीरो गया. 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 अपॉन 1. लेकिन रेशो क्या होगा इसको? 5:1. नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज. 3:5 एंड 5:7. 5 और 7 का एलसीएम 5 into 7, विच इज़ 35. तो इसको बनाएंगे हम 35, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको बनाएंगे 35, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 21 अपॉन 35 एंड 25 अपॉन 35. दिस इज ग्रेटर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर. ऐसे करना है कंपैरिजन. नेक्स्ट, टू इज टू 9 एंड 4:11. 9 और 11 का एलसीएम है 9 into 11, विच इज 99. तो इसको बनाना है आपको 99, तो 11 से मल्टीप्लाई करो. इसको बना है 99, तो 9 से मल्टीप्लाई करो. तो दिस इज 22 अपॉन 99 एंड दिस इज 36 अपॉन 99. तो ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है. ओके. नेक्स्ट, इन अ फार्म हाउस there are 80 cows and 30 buffaloes. cows कितने हैं? 80. buffaloes कितने हैं? 30. what is ratio of cows to buffaloes? 80 upon 30, 8 upon 3. लेकिन पूछा है रेशियो 8:3. नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 से लेकर 15, 10 क्वेश्चन है. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी शुरू करते हैं. 1 मिनट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. In a packet of sweets, for every 20 sweets, there were 4 chocolate bars and the remaining were toffees. अगर मेरे स्वीट्स 20 है, तो चॉकलेट बार्स कितने हैं? 4. और टॉफीज कितनी है? रिमेनिंग, मतलब 20 minus 4, which is 16. What is the ratio of toffee to chocolate? Toffee to chocolate, 16 upon 4, which is 4 into 4 upon 4 into 1. Answer is 4/1 or 4:1. Okay. Fine. Let's look at question number 6. The measures of
two angles are in the ratio 7:8 and they are supplementary angles. What are their measures in degrees? Let the measure of the two angles be 7 degrees and 8 degrees. सप्लीमेंट्री एंगल्स है, देयरफॉर उनका सम कैसे होगा? सम होगा उनका 180, तो 15n होगा 180 डिवाइड बाय 15 on both sides. So I get 15n upon 15 is 180 upon 15. So I get n is equal to 12. तो एंगल्स क्या है? एक एंगल है 7 इंटू 12 मतलब 84 डिग्रीज, दूसरा है 8 इंटू 12 मतलब 96 डिग्रीज. ये हो गया 6. अभी 7. The sides of a rectangular field are in the ratio 9:7 and its perimeter is 144 meters. Find the sides. तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके साइड्स है इन द रेशियो 9:7. लेट द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 9n एंड 7n. रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ऐसा है मेरा रेक्टेंगल. 9n बड़ा साइड है, 7n छोटा साइड है, लेकिन रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 9n plus 7n 16n. 2 इंटू 16n इज द पेरीमीटर. लेकिन उसे दिया क्या है? वो कहता है and the perimeter is 144 meters. So this is equal to 144. Therefore divide both sides by 2 multiplied by 16. 2 into 16n upon 2 into 16 is 144 upon 2 into 16. 16 9s are 144. तो n क्या बना मेरा? एक्सक्यूज मी, 9/2. तो 9n क्या होगा? एक साइड 9n, 9 इंटू 9/2, 81/2 which is 40.5 meters. और दूसरा है 7n मतलब 7 इंटू 9/2 which is 63/2 which is 31.5 meters. Okay, फाइन. अभी 8 to 15 करने हैं. Let's look at question number 8. The sides of a rectangular piece of paper are in the ratio 2:3. रेक्टेंगल का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम ड्रॉ करना. ठीक है, कंपल्सरी डायग्राम ड्रॉ करना है. The sides of a rectangular piece of paper are in the ratio 2:3. Question number 8. Let the sides of the rectangle be 2n and 3n. तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं.
3n लेंथ है, 2n breadth है. If the area is 150 square centimeters, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज 2n, सॉरी लेंथ 3n है, 3n into 2n, which is 6 into n square. Find the length of its sides. एरिया कितना है उसका? 150 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. दिस इज इक्वल टू 150. क्या करेंगे हम? डिवाइड both sides by 6. So I get 6 into n square upon 6 is 150 upon 6. So I get n square is 25, but n being a natural number, answer will be 5. So what are the sides of the rectangle? 2n matlab 2 into 5 matlab 10 centimeters, and 3n matlab 3 into 5 matlab 15 centimeters. That was question number 8. Now we are looking at question number 9. The sides of a triangle are in the ratio 2:3:4. Let the sides of the triangle be 2n, 3n and 4n respectively. Its perimeter is 63 centimeters. छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये 2n है, ये 3n है, ये 4n है. What is perimeter of triangle? Perimeter of triangle. क्या होता है perimeter of triangle? Sum of all sides. So this is 2n plus 3n plus 4n, which is 5 plus 4 9n. लेकिन दिया क्या है? पेरीमीटर 63 मीटर्स सेंटीमीटर्स, which is equal to 63. Divide by 9 on both sides. So I have 9n upon 9 is 63 upon 9. तो इसलिए n बना मेरा 7. तो ये साइड कितना होगा? 2 into 7, 14 सेंटीमीटर्स. 4 into 7, 28 सेंटीमीटर्स. 3 into 7, 21 सेंटीमीटर्स. इनका सम देखो, 14, 28, 21. 8 plus 1 9 plus 4 13, 4 plus 2 6, 63 सेंटीमीटर्स. दिया है वो उतना ही है. Let's go to the next question. Okay. 10th. Question number 10. Amar divided his collection of stamps in the ratio 6:5 between his two sisters Sheila and Amina. If Sheila received 23 stamps more than Amina, how many stamps did he distribute? Let the share of Sheila and Amina be 6n and 5n respectively. तो ज्यादा किसके पास है? 6n वाले के पास, मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब शीला के पास. If Sheila received 23 stamps more than Amina, मतलब 6n minus 5n is 23, मतलब n कितना हुआ? 23.
Then how many stamps did he distribute? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत इंटेलिजेंट वे से। टोटल स्टैम्प्स डिस्ट्रीब्यूटेड, किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया उसने? शीला और अमीना में। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 6n प्लस 5n, मतलब 11n, मतलब 11 इंटू 23, विच इज 23 इंटू 11। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 23 इंटू 10 प्लस 1, विच इज 23 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 1, विच इज 230 प्लस 23। आंसर इज 253 स्टैम्प्स। इतने स्टैम्प्स डिस्ट्रीब्यूट किए उसने। कितने स्टैम्प्स डिस्ट्रीब्यूट किए? 253 स्टैम्प्स डिस्ट्रीब्यूट किए उसने। क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टैम्प्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फाइन। 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। The numerator and denominator fraction and the ratio 3:2. Let the numerator and denominator of the fraction be 3n and 2n respectively. If 3 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, a new fraction is formed whose value is 9/4. तो फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? 3n अपॉन 2n। न्यू क्या है? 3 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator. 3 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, then the new fraction becomes 9/4. New fraction becomes 9/4. Find the original fraction. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 4 इंटू ब्रैकेट 3n प्लस 3 is 9 into bracket 2n minus 2, which is 9 into 2 into n minus 1. इस मेथड से नहीं करते, थोड़ा अलग लगेगा आपको, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इंटू 3n प्लस 4 इंटू 3 is 9 into 2n minus 9 into 2. ये होगा 12n plus 12 is 18n minus 18. Subtract 12 from both sides. तो क्या मिलेगा मुझे? 12n plus 12 minus 12 is 18n minus 18 minus 12. तो ये गया, तो I get 12n is 18n minus 30. अभी क्या करूँगा मैं? Subtract 18n from both sides. So I get 12n minus 18n is 18n minus 30 minus 18n. तो ये गया, 12 minus 18 minus 6n is minus 30. अभी क्या करूँगा मैं? Divide by minus 6 on both sides. Minus 6n upon minus 6
is -30 अपॉन -6, n इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया मेरा n। ठीक है, अभी क्या चाहिए उसको? क्वेश्चन क्या है 11th वाला? फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? n क्या मिला मेरे को? n क्या है मेरा? 5। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? 3n, मतलब 3 इंटू 5 15 अपॉन 10। ये है मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर इक्वेशन आता है तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। Alka and Shweta invested 1800 and 2400 respectively in a small business. They made a profit of 1400. They had to divide the profit in the ratio of the investment. How much did each get as profit? ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो of Alka and Shweta is 1800 is to 2400, which is 1800 upon 2400. ये 0000, 6 into 3, 6 into 4, which is 3/4, और 3:4। तो पूछा क्या है? They made a profit of rupees 1400. Okay, so profit share of Alka, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 + 4 = 7। तो अलका का प्रॉफिट शेयर 3/7 ऑफ 1400, विच इज 3/7 इंटू 1400, विच इज 600 रुपीज। और श्वेता का 4/7 of 1400, which is 4/7 into 1400, which is 7 into 200, which is 800 रुपीज। ऐसे सॉल्व करना है इसको। आप x लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई फाइंड दिस मेथड वेरी स्मार्ट एंड सिंपल। मिस्टेक होने का चांस 0। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। Two numbers are in the ratio 7:10. If the larger is 140, what is the smaller number? Let the two numbers be 7n and 10n. तो larger number is equal to 10n equal to 140. So 10n equal to 140. Divide by 10 on both sides. So what do I get? 10n upon 10 is 140 upon 10. So I get n is equal to 14. पूछा क्या है? What is the smaller number? Smaller number क्या होगा? 7n. 7 into 14, 98. Next, question number 14. Praveen and Ritesh have pocket money in the ratio 5:3. If Praveen gives 20 rupees to Ritesh, both of them will have equal amount of money. How much did each of them have in the beginning? Let amount of money with Praveen and Ritesh be
phi n and 3n रिस्पेक्टिवली. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. रुपीस, यहाँ पे रुपीस लिखना भूल गया मैं. ओके, तो प्रवीण पैसे कितने दे रहा है? 20. फाइव एन माइनस 20 इज मनी लेफ्ट विथ प्रवीण. तो रितेश के पास कितने पैसे आएंगे? 3n plus 20 is money with रितेश. तो ये दो इक्वल है. 5n minus 20 is 3n plus 20. Subtract 3n from both sides. कुछ भी कर सकते हैं हम 20 को यहाँ ले जाने के लिए या फिर 3n को लेफ्ट में ले आने के लिए. But we'll do this first. Okay, so I get 5n minus 20 minus 3n is 3n plus 20 minus 3n. तो 5n minus 3n कितना हुआ? 2n. 2n minus 20 is 20. अभी क्या करेंगे हम? Add 20 to both sides. So I get 2n minus 20 plus 20 is 20 plus 20. So I get 2n is equal to 40. आगे divide by 2 on both sides. Divide by 2 on both sides. So I get 2n upon 2 is 40 upon 2. 2 20s are 40. So I get n is equal to 20. अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हाउ मच डिड ईच ऑफ देम हैव इन द बिगिनिंग. इसके पास कितना था? 5n, मतलब 5 into 100, सॉरी नॉट 100, आंसर हो गया था. 5 into 20 विच इज 100 रुपीज. और इसके पास कितने थे? 3 into 20 मतलब 60 रुपीज. ओके फाइन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 15. The angles of a pentagon are in the ratio 2:4:2:1:1. If the total measure of the angles of the pentagon is 540 degrees, what are the measures of each angle? So let's look at this question. Let the measure of the angles of the pentagon be 2n, 4n, 2n, 1n, 1n respectively. So sum of the angles कितना है? 2n plus 4n plus 2n plus 1n plus 1n. But how much is that? That is 540. So 6, 8, 9, 10. 10n is 540. Divide by 10 on both sides. So I have 10n upon 10 is 540 upon 10. So I get n is equal to 54. What is the measure of each angle? This is 2n. This is 108. This is 2n. This is 108. This is n. This is 54. This is n. This is 54. And this is 4n. It is 4 into 54, which is 216. Okay. So we'll stop here and we'll continue in the third part. Thanks a lot.